We are discussing chapter number 1, History of Chemistry. Lecture outline is Principles and Methods in Chemistry, Evolution of Scientific Ideas, Scientific Paradigms in Chemistry, Confidence and Uncertainty in Chemistry, Repeatability and Reproducibility. So first of all, we will discuss the principles and methods in chemistry. To do science, you need to work within a scientific community where people share ideas, methods and practices to build knowledge. नॉलेज गेन करने के लिए जो आइडियाज हैं जो मेथड्स हैं वो शेयर किए जाते हैं दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर केमिस्ट्री वेयर साइंटिस्ट फॉलो सेट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स तो हमारे पास स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं हमारे पास स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है इसमें अगर प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी इसमें हम ये कहते हैं कि एनर्जी एंड मैस कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ क्लोज सिस्टम फॉर एग्जाम्पल in a chemical reaction, the total mass of the reactant is always equal to the total mass of the product. So जितना mass reactant का था, उतना ही mass product का होना चाहिए. This principle first shown by Antoine Lavoisier in 18th century changed the way chemists do experiments by making them more accurate and reliable. If an experiment does not follow this rule, chemists check their procedures and calculations to find what went wrong. तो अब ये एक प्रिंसिपल है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी कि मैस और एनर्जी दोनों ने कंजर्व रहना है अब अगर एक हमारे पास इस तरह की ऑब्जर्वेशन आती है एक्सपेरिमेंट्स में तो हमें ये लगता है कि उसमें मैस और एनर्जी कंजर्व नहीं रह रहे तो इसका मतलब है कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम है और हम दोबारा से अपना जो मेथड है उसको रिकंसीडर करते हैं नेक्स्ट using observations and logical thinking. Chemists create theories and models based on what they observe in experiments. They use logical thinking to make sense of their findings. For example, Dmitry Mendeleev created the periodic table by observing pattern in the properties of the element. He even predicted elements that had not been discovered yet based on this pattern. सो उसने लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू डिमिट्री मेंडलीव ने एक पैटर्न डेवलप कर दिया कि इस पैटर्न की बेस पे जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज होंगे दिस वे ऑफ यूजिंग एविडेंस एंड रीजनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क साइंस में एक स्पेसिफिक सिमेट्री होती है तो इस तरह हम एविडेंसेस को लॉजिकल रीजनिंग को यहाँ पे यूज करते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स Chemists, like other scientists, use controlled experiments to test their ideas. They change one variable at a time while keeping other constant to see what happens. So देखिए हम सारी वैल्यूज को एक ही टाइम में चेंज नहीं कर सकते ठीक है तो हमें किसी एक वैल्यू को चेंज करना होता है और बाकी सारी कंडीशंस जो है उनको हमें कांस्टेंट रखना होता है जैसे हम बॉयल्स लॉ की अगर बात कर लें तो बॉयल्स लॉ में हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारा जो प्रेशर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो इस सिचुएशन में हम ये कह रहे होते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है या जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स हैं दीज आर कांस्टेंट सो हमें जब हम इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम को तो बाकी जितने भी वेरिएबल्स वहां पे हैं वो सारे कांस्टेंट होंगे तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम फॉर एग्जाम्पल in pharmaceutical chemistry, controlled experiments are used to test if new medicine work and are safe. This method is used in other sciences like biology and physics to find cause and effect relationship. Peer review. So students जो भी scientific work publish होना होता है तो उसको पहले जो दूसरे साइंटिस्ट होते हैं उनसे रिव्यू करवाया जाता है ताकि वो उसको मेक श्योर हो जाए कि वो करेक्ट है और वो रिलायबल है So before scientific work is published, it is reviewed by other scientists to make sure it is correct and reliable. Chemists share their result in journals where experts check the experiments, data, and conclusions for mistakes or unclear parts. For example, if a chemist discovers a new catalyst, it must be reviewed and tested by other scientists to confirm the findings.
This process ensures the quality of scientific research. Being objective. In science, results must come from facts, not opinions or biases. Chemist aims to be objective when performing experiment and analyzing that. तो आपको अपने फैक्ट्स की बेस पे डिसाइड करना होता है, उसकी बेस पे रिजल्ट्स लेने होते हैं. अपनी ओपिनियन या आपका जो गेस होता है उसकी बेस पे आपने डाटा कलेक्ट नहीं करना. For example, when identifying the structure of molecules using spectrometry, they rely on precise measurement and standard method instead of guesses or personal beliefs. Skepticism and proof. Skepticism basically doubts होते हैं. Scientists are naturally skeptical and always double check new discoveries. जो भी new discoveries होती हैं उनको दोबारा से check करते हैं. They repeat experiments and have others test their work before accepting it. तो वो उसको दोबारा से अपने experiments को repeat करते हैं और दूसरों से भी check करवाते हैं. For example, if someone claims to discover a new element or reaction, other scientists will conduct many tests to verify it. This skepticism helps ensure that only trustworthy information becomes part of science. Next, evolution of scientific ideas, paradigms. What is scientific paradigm? A scientific paradigm is a set of idea, method, and rules that guide scientists in their research. It helps scientists understand the natural world and explain their discoveries. Paradigms give scientists a consistent way to study and share knowledge. However, when the new evidence challenges an existing paradigm, it may be replaced with the better one. Here are some examples of scientific paradigms and how they changed over time. First one is Phlogiston Theory. In the 1700s, scientists believed in the Phlogiston Theory to explain burning, combustion and rusting. So ये जो burning का process होता है, combustion का in the presence of oxygen और rusting का जो process है, ये consider किया जाता था कि इसको Phlogiston Theory explain करती है. According to this idea, materials that could be burned contain a substance like phlogiston, which was released during burning. For example, when metal rusted, people thought they observed dephlogisticated air. Later, Antoine Lavoisier proved that the combustion happened because of the oxygen combining with the substances, not because of phlogiston. His work introduced a new way of thinking about the chemical reactions, replacing the phlogiston theory with the modern concepts of oxidation and reduction. So इस तरह से जो new evidences की base पे जो existing paradigms होते हैं वो better one से replace हो जाते हैं. So ये first example हमने देख लिया. Next, historical models of atom. Scientists have changed their ideas about what atoms looks like as they learn more through experiments. These changes happened because new experiments provided better evidences. So first one is the plum pudding model, 1904. J.J. Thomson suggested that the atoms are like a pudding with negatively charged electrons, the plums scattered in a positively charged soup. So अगर plum pudding model की बात की जाए तो यहाँ पे जो red surface आपको नजर आ रही है, यूं कंसीडर करें कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस टोटल रेड सरफेस के ऊपर, और ये जो आपको सर्कल नजर आ रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. इसको अगर हम जनरल एग्जांपल में लें तो वाटरमेलन में जो उसकी रेड सरफेस होती है उसको आप कंसीडर कर लें कि उसके ऊपर होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसके सीड्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज. तो इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फिर इस मॉडल को रिप्लेस किया रदरफोर्ड मॉडल के साथ. 1911 में रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया और इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉयल. उसमें जो कंक्लूजन्स आए उसके बेस पे हमने ये कहा कि वहां पे एक न्यूक्लियस है एटम के सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके आउटरमोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं. So Rutherford Goldfile experiment showed that the atoms have a small, dense, positively charged center called a nucleus, with electrons orbiting around it. So इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के मॉडल में.
इस रदरफोर्ड मॉडल को फिर रिप्लेस किया गया बोहर मॉडल और क्वांटम मॉडल्स। Latest scientists improved Rutherford model by adding ideas about the energy levels Bohr model. So Bohr model हमें ये बताता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज तभी करता है जब वो शेल चेंज करता है। एंड क्वांटम मैकेनिक्स which is the current way we understand atom. So क्वांटम में बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। हम क्वांटम मैकेनिक्स का जो मॉडल है इसी के थ्रू हम एटम को अंडरस्टैंड करते हैं। थर्ड इज द पीरियोडिक टेबल। Dmitri Mendeleev created the periodic table in 1869 to organize elements based on their atomic masses and properties. His table was powerful because it predicted the existence of the element that had not been discovered yet. So ये जो मेंडलीव थे इन्होंने एक periodic table 1869 में डेवलप किया और उन्होंने अरेंज किया उनकी प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मैसेस की बेस पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। As scientists learned about atomic structure and quantum mechanics, they updated the periodic table. Today, elements are arranged based on their atomic numbers and electronic configuration. This modern version explains why elements should show similar chemical properties at regular intervals, periodicity, and helps us understand their behavior and reactions. तो जिस तरह से हम देखते हैं कि जब हम ग्रुप्स में अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो वो मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं। सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो वो एक स्पेसिफिक, इसी तरह से अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो दे आर स्टेबल, तो वो कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करते हैं ना लूज करते हैं, तो इनकी एक स्पेसिफिक पैटर्न्स हमें नजर आते हैं सब ग्रुप्स में भी और पीरियड्स में। नेक्स्ट साइंटिफिक पैराडाइम्स इन केमिस्ट्री, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं साइंटिफिक पैराडाइम को। साइंटिफिक पैराडाइम in chemistry are ideas and rules that help us understand how substances behave and interact. Importance: these paradigms guide scientists in creating experiments, testing ideas, and interpreting results. They help us learn more about the materials we already know, and they also inspire the creation of new materials and technologies. And next, this is important for progress in the field like medicine, material science, and the environmental protection. Next is confidence and uncertainty in chemistry. Chemistry, like other sciences, involve both confidence and uncertainty when analyzing experimental results. Scientists use tools to measure how precise or reliable their data is. Confidence intervals. Confidence intervals shows how precise a measurement is. For example, if a pharmacist measures the concentration of a solution to be 0.5 molar with a 95% confidence interval, 0.48, 0.52 molar, it means they are 95% sure that the true value is within this range. तो ये जो रेंज बताई गई है 0.48 to 0.52, अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है तो इसका मतलब है कि दे आर कॉन्फिडेंट कि ये जो रेंज है इसके दरमियान में ही इसकी ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। P value. P value helps scientists check if experimental results are meaningful. For example, if a chemist tests whether a new catalyst works faster than the old one and finds the P value of 0.01, it means there's only a 1% chance that the result is random. This shows that a new catalyst is almost certainly better. Next, standard error and standard deviation. These tools measure how much data varies. For example, if a chemist measures the melting point of a substance and finds the average is 120 degrees Celsius with a standard deviation of 0.5 degrees Celsius, it means the results are consistent. A small standard error shows that the average value is accurate. So ये basically ये tools हैं
जो बताते हैं कि जो डाटा है, जो हमारा रिजल्ट है, वो कितना ज्यादा वेरी कर सकता है। Bayesian probability. These methods update our confidence in an idea based on new evidence. For example, if a chemist first believes there are 60% chances a reaction happened in a certain way, but new data raises their confidence to 80%, they have used Bayesian probability to update their understanding. तो देखिए फॉर एग्जांपल हम ये समझते हैं कि पहले हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट है जिस पे हम बिलीव करते हैं कि ये 60% चांसेस हैं, और फिर हमारा नॉलेज मजीद इंक्रीज होता है, और उस नॉलेज की बेस पे हम फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। मीन कि जो उसके रिएक्शन की हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है, दैट इज 80%। तो ये इस सिचुएशन में हमने बेशियन प्रोबेबिलिटी यूज की है। Fifth is quantifying uncertainty. Uncertainty tells us how reliable a measurement is. For example, if a chemist measures the concentration of a solution as 0.250 molar plus minus 0.005 molar, the uncertainty is 0.005 molar, meaning the true value is close to 0.25 मोलर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं इसमें से अगर माइनस कर दूं 0.250 में से, तो ये मेरे पास आ जाएगी रेंज 0.245, ये रेंज है लोअर, और जो अपर हो जाएगी ऐड करके, इस वैल्यू में ये अनसर्टेनिटी हम ऐड करेंगे अभी, तो 0.255। तो ये बेसिकली इसको हमने इसमें पहले माइनस किया और फिर ऐड किया, तो इसका मतलब है कि जो हमारी अभी वैल्यू आने वाली है ट्रू वैल्यू, वो इसी रेंज में लाए करेगी। Next is repeatability and reproducibility. In chemistry, repeatability and reproducibility are important for providing the experiment results are reliable. Repeatability, this means getting the same result when repeating an experiment under the same condition, using the same tools and procedures. For example, if a chemist measures the melting point of the substance several times in a same lab and get the same results in each time, the experiment is repeatable. मतलब एक दफा आप देखिए सेम इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, उसी लैब में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपके पास एक लिक्विड है और उसका आप मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, तो आपने 5 to 10 टाइम्स वो फाइंड आउट किया मेल्टिंग पॉइंट, और हर दफा आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो रिपीटेबल है। Next is reproducibility. This means getting the same result even when the experiment is done in different labs with different tools, method and scientists. So reproducibility में आप ये देखते हो कि जो रिजल्ट्स आपने एक लैब में प्रोड्यूस किए हैं वो आप कहीं और भी प्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है। For example, if different chemists in different labs measure the same substance's melting point and get the similar result, the experiment is reproducible. क्योंकि डिफरेंट लैब्स में बैठे हैं तो डिफरेंट टूल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट सेम आ रहा है सबका, तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ ये जो आपके रिजल्ट्स हैं, ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है, ये रिप्रोड्यूसिबल। Why are these important? Repeatability and reproducibility. Repeatability shows that the experiment is well controlled and consistent in one setting. Reproducibility shows that the findings are reliable and not limited to one lab or method. Both helps scientists ensures their discoveries are accurate and accepted by others.